Hi, this is Mavra Hussain and you're watching Bollywood Hangama. How's it your experience of being on, say, Bollywood, like say on Pakistani chat shows? Because I was seeing one of your interviews on a chat show, and the amount of all these things that they put. इधर हमें तो लगा था कि आपकी पहली फिल्म जो है शायद उसमें फोश कुछ एलिमेंट होगा, लेकिन वो हमें तो बिल्कुल नज़र नहीं आया. कहीं ना कहीं जो एक जजमेंटल एलिमेंट है वो थोड़ा सा उससे आपको खौफ होता है कुछ? मुझे लगता है कि अगर ज्यादा खौफ करने लगेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे लाइफ. औरतों के मुताल्लिक honestly I tell you I don't think about all of this. That's what keeps saving me. क्योंकि अभी आपने एक क्वेश्चन किया तो मुझे सोचना पड़ा कि मैं इस बारे में क्या सोचती हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचती हूँ. I come from a family where my parents are more than happy with what I do. My siblings are always proud of me. So मुझे ऐसा लगता है कि कोई इस तरफ थॉट ले जाने का कोई मेरे पास रीजन नहीं है. So I'm very happy doing what I do, and then I do what I feel is right. So eventually some people would find it right, some people won't. Even this interview, it's all very subjective. Some people will think this is not the right thing to do, some people will think it is. तो वो मुझे लगता है कि अगर आप उस subjectivity में पढ़ोगे तो you'll have to stop and see what to do next. तो मुझे लगता है one should just go with the flow. And okay, and many people from India, they have all sorts of notions about Pakistan and all sorts of एक आप जहन में आप बना लेते हैं कि भाई दैट पाकिस्तान में ये होता होगा, पाकिस्तानी ऐसे होते होंगे. लेकिन जब हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो काफ़ी बार हम काफ़ी चीज़ें, जैसे अगर आपको देखें तो आप खासा आप लिबरल आप नज़र आती हैं और खासा मॉडर्न आप नज़र आती हैं, और एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू है वो मुख्तलिफ है. I think I'm any other girl who will be 23 and be it India, be it Pakistan, be it anywhere in the world. वो डिपेंड करता है कि what age group you are into, and that's why I think हम बना पाते हैं fans across border also, because we are just like them. वो ऐसा पता नहीं होता, but we are just one of them. लेकिन अगर जैसे अगर पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में अगर बात करें तो आपको कैसा लगता है कि दैट किस तरीके से इवॉल्व कर रही है? What is your personal opinion as a young Pakistani yourself? I wish मैं इतना सोचती होती. मुझे एकदम से लग रहा है मैं क्यों इन बातों पे सोचती नहीं. लेकिन I think societies would differ from a city to city. तो वो कुछ ऐसा general opinion नहीं है मेरा किसी भी society पे. मुझे बस ये लगता है I am from Islamabad. I think it's a very liberal society, and I like being where जहाँ मैं बड़ी हुई हूँ. I like that place. और मुझे कभी भी कुछ ऐसा restrained या कुछ ऐसा feel नहीं हुआ है. So I'm sure I come from a liberal society, but I haven't really had a bird's view of it also. So I don't know, but you can visit us and you can see what Would it's love to like. actually. Would love to. In fact, that is something that is on my bucket list, and apparently Pakistani food is excellent actually. Oh, you must go to Lahore and eat. Yeah, that's what. Yummy food. That's what. Even Karachi, I believe, the food. Yeah, but the yummiest is Lahore. Is Lahore? Okay. Best food, best nahari, best halwas. Nahari, my God. Yeah. Seriously.